Assalamualaikum, welcome back to another video. As you know, like my previous video, I roast, marinated the turkey. So today's Thanksgiving, so we are going to celebrate. It's just a family dinner. So usually, as I mentioned earlier, like हम लोग जो है वो every year get together करते हैं और खाना खाते हैं और enjoy करते हैं. So we see each other every so like Thanksgiving occasion. तो बेसिकली इस साल जो है वो पेंडेमिक की वजह से कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, सो गेट टुगेदर तो नहीं हो सकता. सो आई जस्ट ट्राइड, आई जस्ट पुट इन लिटिल एफर्ट कि हम लोग खुद से डिनर जो है वो बना लें. सो आई जस्ट वोक अप एंड आई जस्ट टुक शावर. और अभी जो है मैं किचन में जाऊंगी. सो आई एम गोना स्टार्ट मेकिंग स्टफ. सो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, सिर्फ टर्की नहीं होती, स्टफिंग भी होती है, ग्रेवी होती है, मैश पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स. और I'm gonna make like some different Pakistani food as well to make sure like if somebody want to eat something else, so कुछ होना चाहिए. And I have made shami kebab. So shami kebab जो है मैं I will make it going in the kitchen, and my whole family is going to help me for sure. Already there in the kitchen. So मैं थोड़ा late जाऊँगी because I was like honestly too tired. So last night I had to clean up some stuff and all that. So yeah, so that's all, and let's just go to the kitchen. Okay, तो मैं किचन में हूँ और मैंने चीज़ें कुछ बना ली हैं. मैंने सैलरी काटी है. सैलरी जो है लाइक there we go. मैंने कुछ कैरेट्स काटी हैं. ये मैंने स्टफिंग के लिए ली हैं चीज़ें, फाइनली चॉप की हैं लाइक दिस, इस तरह से. और कॉर्न है ऑलरेडी आई मेड सो कॉर्न मैंने बॉइल करके थोड़े से, उसमें जो है मैंने थोड़ा सा वो मार्जिन डाल दिया, जस्ट टू मेक अ लिटिल tasteful. So ये हो गया. फ्रिज में मैंने जो है मैक्रोनी सैलड बना के, इट इज़ मैक्रोनी सैलड. It tastes so good. So टर्की जो है मैं एक्चुअली ओवन में लगाने लगी हूँ क्योंकि इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. ओवन में 325 पे मैं लगाऊंगी. और पहले मैं स्टफिंग बना लूँगी कि मैंने अभी जो है ना इसके लिए वो काटे हैं ब्रेड के पीसेस, लाइक आई मेड देम लाइक दिस. सो ऐसा काट के रखा है मैंने. मशरूम काटे हैं ग्रेवी के लिए, तो इस तरह से. तो अभी बस आधी अधूरी चीज़ें बनी हुई हैं. सो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा किचन समेटने में और चीज़ें बनाने में, क्योंकि मैं साथ में थोड़ा सा खाना बना रही हूँ. मैंने ये कीमा मिर्चें बनाई हैं. एक्चुअली सबको बहुत पसंद हैं तो मैं मतलब अक्सर ही बना देती हूँ खाने का. सो ये मैंने थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की बनाई है. आई विल अपडेट यू हाउ आई कुक. सो दिस इज दैट. एंड ये अचारी मिर्चें मिर्ची के लिए, अचारी मिर्चें, कीमा मिर्चें. सो या थोड़ा थोड़ा मैं अपडेट करती रहूँगी. अभी घर में बहुत गंद पड़ा हुआ है. अभी हम टेबल सेट करेंगे, थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को प्रॉपर माहौल चाहिए. यू नो व्हाट आई मीन, लाइक ही वांट टू फील दैट टर्की डिनर वाइब्स. तो ऐसे सबको अपडेट करूँगी. अभी मेरी हालत बहुत अजीब लग रही है. सो आई विल गेट रेडी ऑफ कोर्स. अच्छा, सेज जो है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है. उस वक्त मेरे पास रात में अवेलेबल नहीं थी. और टर्की के जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे कि see what? Well, actually, small spoon or bigger spoon? Yeah, that's what we're gonna do. Oh, which one? So which side? Stuffing, yeah. Let me find something. Okay, हम मेरे टर्की की स्टफिंग बनाने लगे हैं. तो बटर मैंने मेल्ट किया है. chopped onion, and chopped garlic with 5 or 6 cloves.
So इन सब चीज़ों की जो रेसिपी वो मैं आपको बाद में अपडेट करूँगी. मैंने सबकी बनाई है, so I will mention in the other different videos. So इसमें थोड़ा सा walnuts डाले हैं मैंने. Look at how colorful it looks. इसमें मैंने टर्की रखी थी, तो मैं इसी के अंदर जो है ये अपना सारा डाल रही हूँ स्टफिंग का, और इसी के अंदर जो है हम ब्रेड डालेंगे. You ready, huh? Yeah, almost. Wow. So this is the broth, a chicken broth. Hey, look at changing colors. I know. Well, you roast? Man, being is so dangerous, you know. Yeah. मार के किसी को कैसे देखना. Astaghfirullah. मार के नहीं खा रहे, हलाल के खा रहे हैं. भरे और इसको. Oh, I forgot to mention about removing the insides of it before starting. You didn't take out if it isn't an anatomy or something. There's nothing inside. Yeah, now Reading yeah. about anatomy, come on. Anatomy, you know. No, I don't know. The animal anatomy. No, I don't know. The insides is part of a body. Like और नहीं जा रहा अंदर. the organs is a part of biology, anatomy. So हम लोग जो है मैं मैश पोटैटोज बना रहे हैं, और इसकी रेसिपी भी मैं बाद में अपलोड करूँगी. करने पड़ेगा. रोड में गई थी ना. Half an hour, less than half an hour. ग्रेवी काफ़ी होनी चाहिए. So our dinner is ready. Here's the turkey and rest of the क्या कहते हैं लवाजमात. बनाई होंगी. बस ये था कि चलो निकल सूझती रहती थी उसे. मुझे एक हिस्सा था पूरा उसके जिस्म में, जैसे मैंने अर्ज किया कि उसका पूरा जिस्म बजता था सांसों से. Okay, what's going on here? Selena, come here. Selena, sit here. Okay. Okay, how was the turkey? Honest reviews. Really good. Really awesome. Love it. That's good. Wow, that's Wow. Yeah, say wow. Oh, everyone had all of it, I guess. So share. Everything was so good. Already. So that was the dinner for today. One more. You have to, don't forget some of you have to share the rest. I know, I'm not gonna Okay. Yeah, I'm trying to be good. Mashallah. Thank you, Selena, for eating this. Okay, so that's all for today. The turkey was actually delicious. Okay, so no exaggerating, the recipe works out like perfect, and turkey turns out so good. You can also follow me on Instagram for more updates and pictures of turkey and all those things, because I do a lot of things on Instagram as well. So make sure you follow me on Instagram, and don't forget to subscribe to our channel. I really need your support. I love you all. Thank you so much for watching. I'll see you soon. Bye.